वाटर का इंटेक लेते रहे आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 20, मतलब भर भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा, सो दैट द ऑक्सीजन कैन बी कंप्लीटेड इन योर, इट इज इन योर बॉडी में मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा आप यूज करते हो तो ऑक्सीजन की नीड होती है, यस और नॉट। सो आई सेड दैट 10 days में you completed a one work. So in one day, how much work you will complete? Work per day? Yes or not? Yes or not? Do not take it easy. If you are taking 20 days to complete a one work, in one day how much you will do? It's simple. Hai? If you are taking 2 days to complete a work, so in one day how much? Yes or not? It is considered as a capability of a person. It is considered as a capability of a person. So आप लोगों को बोलना है बच्चे की तरह, it's like a kid. If A can complete a work in 10 days, what is its capability? जितना बोलोगे उतना ही सीख जाओगे. And you can do it in a very few minutes. उसके बाद pipes and cistern will automatic completed. Clear? Again I said that if you complete a work in 10 days, what is your capability? Yes, tell me first. If you can complete a particular work in 15 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 20 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 25 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 40 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 2 by 15 days, what is your capability? 15, sorry, if you can complete a particular work in 15 by 2 days, what is your capability? 2 by 15, just ulta. Yes or no? Again I said that if you can complete a particular work in 40 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 30 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 29 by 2 days, what is your capability? Understood? If you can complete a particular work in 20 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? If you can complete a particular work in 10 days, what is your capability? Then how much you will do in 3 days? How much you will do it in 3 days? And how much you will do in the x days? 1 by 10. अभी x by 10 स्मार्ट नहीं बनो, अभी यहीं पे रहो, ठीक है? 1 by 10 into x. Understood it? हो गया काम. यही तो सीखना था आपको. Clear? Again I said that if you can complete a particular work, हर एक चीज का एक बेसिक है और यही बेसिक है. इसके बाद आप लोग यही तो आप सीखते नहीं हो. अभी आप देखोगे दिस इज द क्वेश्चन. लाइफ खराब कर रखा था. So I said that if you can complete a particular work in 15 days, what is your capability? And if you can complete a particular work in 30 days, what is your capability? And then how much work done you will do in 5 days? 1 by 30 into 5. Is it okay? Killer. And then I said that if you know the capability, if your capability is 1 by 30, how many days you will take to complete the work? 30 days. Just reverse the capability will become days, and just reverse the days, it will become capability. Understood it? Understood? Write down a question. LCM सबको आता है ना? You should know LCM. That I can't. So write down. A, B and C can complete a work in 20, 40 and 60 days separately. A, B and C can complete a work in 20, 40 and 60 days separately.
all started working together, all started working together, all started working together, and they worked for 3 days. Yes, they worked for, yes, tell me, they worked for, A की कैपेबिलिटी क्या है? tell me, what is the capability of B and what is the capability of C? And they, उनको क्या काम करना है? Only one work they have to complete. Yes, ध्यान से दें, do not do anything. इन्होंने कितने, A ने कितने दिन काम किया? B ने, C ने, they worked together for how many days? 3 days. Thereafter A left, and B and C worked for 2 days. B and C worked for 2 days. Thereafter B left. Then in how many days? The rest of the work will be completed by C. Rest of the work will be completed by C. ध्यान से देखेंगे, I said that. आपने कितने दिन काम किया पहले? 3 days, A, B and C. Thereafter A left. Now who is working? They work for? You will write 2 days. Understood? Understood it? Then who left? B left. Then the rest of the work will be completed by in how many days by the C? X. You are not known. And they have completed the work. They have completed the. So what you will write? 1 upon 20 into 3 days. 1 upon 40 into and 1 upon 60 into 5 plus X. He has done for how many days? अब ये पता नहीं है ना कितने दिन काम किया. That we have to find out. Extra कितने दिन काम किया. In how many days rest of the work will be completed by C. And they have completed how much work? 1. ये सारे मिलकर क्या किया? Equals to 1. Always it will be one work. It will be always what? One work. What is the LCM of 20, 40 and 60? 120. Simple. 26 is 6 into 3, 80. 40, 3 is 3 into 5, 50. 62 is 5 plus x. तो यहाँ से 60 से 2 किया आपने. Multiply with the 5 plus x equals to 1. Now this 120 will come the right side. And what left? 18 plus 15 plus 10 plus 2x equals to 120. That becomes how much? 43. And that will go towards this side. It will become 77. 120 minus 43. This 43 will go this side. And that is x equals to, मैं वो भी लिखूं क्या? 120 minus 43 equals to 77 and x equals to 77 and half days. 77 upon 2, it means how much it become? 38 and half days. समझ में आ गया? स्टोरी है कि नहीं है? अभी तक आप लोग क्या करते थे? दुनिया में कोई भी चीज एक स्टोरी है. एंड आवर अप्रोच ऑफ स्टडी इज, नहीं, हमारा अप्रोच क्या आता है? फार्मूला. मुझे फार्मूला चाहिए. मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो आई नीड ए फार्मूला. ज्योग्राफी पढ़ना है तो आई नीड ए फार्मूला. आप लोग यही करते हो. अच्छा ये समझ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा. बेसिक्स करोगे तो सब कुछ हो जाएगा. बेसिक्स से ही you don't understand that atom bomb is more powerful or neutron bomb is more powerful. The smallest is more powerful.
तो जितना आप एटम्स क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्रिएट सब्सटेंस, तो जितना आप बेसिक को जानोगे उतना ही सब्सटेंस के बारे में जानोगे. When the students started preparing for IIT, we have seen like, हमें लगता था कि आसान है. We have seen like लोग क्या करते हैं, मोल्स ही नहीं जानते हैं, मोलारिटी नहीं जानते हैं, नॉर्मलिटी नहीं जानते, सोचते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दो. क्या? और इस कारण से बड़े बड़े क्वेश्चन भी नहीं हो पाते केमिस्ट्री में. क्या? बेसिक्स को जानोगे देन यू कैन बी एबल टू डू. तो बेसिक्स से सब कुछ बनने लग जाता है. समझ में आ रहा है? एक चीज तो लाइफ में जरूर सीख जाओगे, सक्सेस पॉइंट इज डूइंग गुड, है ना. चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कर जाओगे अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैंने आप लोगों को, मैं ही बच्चे को कहता हूं कि यहां पर आओगे. कभी कभी में से कुछ बच्चा बोलता है, मैंने बोला कि इट विल बी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. सिंपल. हर चीज का एक तरीका होता है. आप हर टॉपिक में एंजॉय कर रहे हो. अच्छा इसमें ये, इसमें ये. पहले क्या करते थे, मैं तो खुद भी कर सकता हूं, है ना, कई टॉपिक्स पे. और यहां पर बच्चे किस लिए आए हैं? रिवीजन करने के लिए. फॉर व्हाई दे कैन रिवीजन. सो डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A, B and C can complete a work (20, 30 and 40 days separately या respectively कह सकते. 20, 30 and 40 days separately. They work together for 2 days. यहां पे ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाऊंगा. इज इट ओके? मैं एक आदमी को बोलूंगा तुम बाहर जाओ, एक आदमी डी को एंट्री मरवाऊंगा मैं, ठीक है, और 2 आदमी को छोड़ दूंगा काम करने के लिए लास्ट में. जैसे यहाँ पे डी को, सी को छोड़ दिया था मैंने, एंड आई विल लीव हु 2 पर्सन. तो दोनों में एक्स एक्स लिख देना है. जो बच गए दोनों साथ में करेंगे ना. यस और नो? सिंपल सी चीज है. ओनली यू नीड टू नो. आपको क्या जानना था? कैपेबिलिटी. And then if they are working for 3 days, then 1 by 20 into 3. यही तो जानना था. This is the basics. And thereafter adding it, they are completing one work. इसके लिए आपने कितना अपना उम्र ले आए हो? एज इतनी आ चुकी है. You are doing since class 6, 7, 8. ये सारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हुआ था. और हमारे टीचर भी सुभान अल्लाह, ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो साइक्लोन समझाते ही नहीं थे. पहले ये साइक्लोन, ऑल दिस थिंग्स आर very early. So write down. A, B and C can complete a work in 20, 30 and 40 days respectively, and they work together for 2 days. Thereafter, A left and D joined. A left and कितने लोग काम कर रहे हैं इस टाइम में? अभी भी 3. And then D can complete the work in 60 days. D can complete the work in 60 days. And they work together for 2 days. They work together for 2 days. Then B left it. अभी कितने दिन काम हुआ? 4 दिन हुआ ना? 2 and 2. Then B left. Then how many days? अभी कौन काम कर रहा है इस टाइम में? C and D. B तो लेफ्ट कर दिया. Then in how many days? The rest of the work will be completed by the rest of the person. और आपको पता होना चाहिए who is the rest of the person. The rest of the work will be completed by rest of the person. Fast.